Hello and welcome to my channel. I'm Madhurima Sharma and today I'm going to talk about measurement levels or level of measurements. So let's start. Level of measurement. Before we can conduct a statistical analysis, we need to measure our dependent variable. Exactly how the measurement is carried out depends on the type of variable involved in the analysis. Different types are measured differently. For example, to measure the time taken to respond to a stimulus, you might use a stopwatch. But when it comes to measuring someone's attitude toward a political candidate, stopwatches are of no use. A rating scale is more appropriate in this case, with label like favorable, very favorable, somewhat favorable, etc. So, the level of measurement is about how each variable is measured. It can be qualitative or quantitative, and how precise each variable is. There are four levels of measurement: nominal, ordinal, interval, and ratio. So, one by one, we will discuss nominal scale or nominal level of measurement. So, nominal scales are used for labeling variable without any quantitative value. Nominal scales could simply be called as labels. A good way to remember the nominal scale or a nominal level of measurement. Nominal sounds a lot like a name, and a nominal scales are kind of names or a label. Okay, suppose there are data about people belonging to three different gender categories. In this case, the person belonging to the female gender could be classified as F. The person belonging to the male gender could be classified as M, and the transgender is classified as T. So this type of assigning classification is a nominal level of measurement. One more example we can take, like for example, there is a question, where do you live? The options are suburban area, city, town. So labels are there. Okay, names are there. This scale is the simplest of the four variable measurement scale, and it is also called as categorical variable scale. So let's see some more example. Here you can see in the image, what is your gender, male and female. This is just a name. What is your hair color, brown, black, blonde, grey, other. Where do you live? North of the equator, south of the equator, neither in the International Space Station. So for a nominal scale, there is one subtype with only two categories. For example, male and female. It is called dichotomous variable. So the dichotomous variable या dichotomous scale जो है, it is one that takes on one of the two possible values when observed or measured. The value is more often representation of the measured variable. For example, अगर हम लोग attributes की बात करें तो gender में हो गया male and female, like marital status, married or unmarried. So this is nominal scale. Next is the ordinal scale. This level of measurement depicts some ordered relationship among the variable observation. And ordinal is very easy to remember because it sounds like a order. Okay, so the ordinal scale, it is the order that matters here. It typically measures of non-numerical concept like satisfaction, happiness or discomfort, like this. For example, we can take, suppose a student scored the highest grade of 100 in a class, and in this case he would be assigned as a first rank. Then the other student of his class only scored 92, and he is the second in the class, and the third who scored 81, and he would be assigned the third rank, and so on. The ordinal level of measurement here indicates an ordering of a measurement: 100, 92, 81. So order is there. The third जो है, he got 81, second 92, third first 100. Like this there is a order, but difference is not the same here. Here you can see example, some more example. How do you feel today? Very happy, unhappy, okay, happy or very happy. How satisfied are you with our services? Very unsatisfied, somewhat unsatisfied, neutral, somewhat satisfied, very satisfied.
So the difference between okay and unhappy here, okay and unhappy, the same as the difference between happy and very happy, we cannot say ना. Here difference can vary. ज़रूरी नहीं है कि between very happy and unhappy के बीच का जो difference होगा वो same होगा between the okay and happy, और okay and happy का जो difference होगा वो same होगा happy and very happy, और same इसके भी केस में है. तो here in ordinal scale only the order is there. Okay, यहाँ पे डिफरेंस हमें पता नहीं चलता बिटवीन द वेरिएबल. नेक्स्ट इज द इंटरवल वेरिएबल. इंटरवल scale are numeric scale in which we know both the order and the exact difference between the value. यहाँ पे हमें order भी पता चलता है and the difference between the value. The example of interval scale is Celsius temperature because the difference between each value is same. You can easily remember this interval by its name only, space in between. Interval itself means space in between, which is important thing to remember. Interval scale not only tell us about the order but also about the value between each item. For example, यहाँ देखो, the difference between 60 and 50 degree is a measurable 10 degree, as is the difference between the 80 and 70. जो difference 80 and 70 के बीच में है वही difference 60 and 50 के बीच में भी है. तो यहाँ पे हमें interval exact same मिलता है. But there is a problem with the interval scale. They don't have a true zero. And in the case of interval scale, zero doesn't mean the absence of value, but it actually another number used on the scale, like a 0 degree Celsius. मतलब absence नहीं है. 0 degree Celsius means temperature absent नहीं है. There is temperature, and there is no such thing as a no temperature, at least not with the Celsius. कोई ऐसा नहीं कि माइनस में है तो टेम्परेचर नहीं, वो भी कुछ वैल्यू रखता है. नेगेटिव नंबर ऑल्सो हैव मीनिंग. एंड जो ये जो इंटरवल स्केल है इसमें विदाउट अ ट्रू ज़ीरो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्यूट रेशियो. विथ इंटरवल डेटा वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बट कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो ये इसका लिमिटेशन है, ट्रू ज़ीरो नहीं होता है इसमें. नेक्स्ट इज रेशियो स्केल. रेशियो स्केल टेल्स अबाउट द ऑर्डर. दे टेल्स अस the exact value in between the unit, and they also have a absolute zero. The properties are similar to that of the interval level of the measurement, and in the ratio level of measurement the division between the point on a scale have equivalent distance between them. तो इसमें order भी है, exact value जो दो यूनिट के बीच में वो भी सेम है, and there is a absolute zero. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशियो स्केल प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ये एक एग्जांपल है. दीज वेरिएबल कैन बी मीनिंगफुली एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड. तो रेशियो निकालना बहुत ईजी हो सकता है. एंड you know, because of the existence of true zero, the ratio scale doesn't have negative value, क्योंकि उसमें ट्रू ज़ीरो है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है. अब जैसे माइनस में अगर कोई वेट है मतलब कोई वेट नहीं है, माइनस में अगर हाइट है तो कोई हाइट नहीं है. एंड इट accommodates the characteristic of three other variable measurement scale, that is labeling of the variable, the significance of the order of the variable, and the calculable difference between the variable. And it is quantitative in nature, as you know. Okay, for example, like एक क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर करेंट हाइट. मे बी 5 फीट हो सकता है, ठीक है. लेस देन 5 फीट, 5 फीट 1 इंच टू 5 फीट 5 इंचेस, 5 फीट 6 इंच टू 6 फीट, मोर देन 6 फीट. तो यहाँ पे इंटरवल भी है, ऑर्डर भी है, एंड ट्रू ज़ीरो भी है. ओके, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन अ 4 टाइप ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट. नॉमिनल, named variable, ordinal, named plus ordered variable, interval, named plus ordered plus proportionate interval between the variable, and ratio,
name plus ordered plus proportionate interval between the variable plus can accommodate the absolute zero. तो ये डिफरेंस है इन सारे लेवल ऑफ मेजरमेंट में. आई होप जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया इट इज़ क्लियर एंड यू कैन अंडरस्टैंड द 4 टाइप ऑफ डेटा measurement scale: nominal, ordinal, interval and ratio. And this is easy to remember chart which will help you. So here you can distinguish between the nominal, ordinal, interval and ratio and can understand कि कौन सा बहुत easily precisely जो है जिसमें वेरिएबल हम लोग बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कर सकते हैं. सो बिफोर वी विल अंडरस्टैंड दिस स्टेप, सबसे पहले हमें मोड, मीडियन एंड मीन समझना है. क्या है मोड, मीडियन एंड मीन? सो मीन जो है ना, इट इम्प्लाइज एवरेज एंड इट इज सम ऑफ द सेट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेटा. अब इसे हमें मीन निकालना है. 5 जो हमारा है वो नंबर है, ठीक है. 5 डेटा है हमारा, 1 2 3 4 5. सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 5. तो ये जो निकलेगा हमारा कैलकुलेशन से, दैट इज मीन. मोड इज द वैल्यू अपीयर्स द मोस्ट. मोड जो होता है जैसे फ्रीक्वेंसी, किसी चीज़ का फ्रीक्वेंसी, लाइक हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, 10 वैल्यूज़ है हमारे, और 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो वो हमारा मोड हो जाएगा. एंड मीडियन इज द मिडल वैल्यू when the data is arranged in a numerical order, like 5 1 2 3 4 5. So third is the median of this data set, because third से पहले 1 and 2 है and third के बाद 4 and 5 है, तो ये मिड वैल्यू. तो हम देखते हैं किस में हम मीन यूज़ कर सकते हैं, किस में मोड एंड मीडियन यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज द सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इज एस्टैब्लिश. नॉमिनल में तो नहीं होता है, यस ऑर्डिनल में होता है क्योंकि ऑर्डर्ड है. इंटरवल एंड रेशियो में तो होता ही. मोड कैन बी यूज्ड इन नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. मीडियन नॉमिनल में नहीं यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है. ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो में वी कैन यूज़. देन मीन नॉमिनल में नहीं कर सकते, देन ऑर्डिनल भी नहीं कर सकते हैं. इंटरवल एंड रेशियो में वी कैन यूज मीन. डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल कैन बी इवेल्युएटेड नॉट इन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल बट येस इन इंटरवल एंड रेशियो. देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में इम्पॉसिबल है, इंटरवल एंड रेशियो में येस वी कैन डू. Then multiplication and division of variable not in nominal, not in ordinal and not in interval, but yes in ratio, because हमारे पास ट्रू ज़ीरो है. एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑब्वियसली ये रेशियो डेटा को बहुत डिफरेंट बनाता है इन तीनों से, बिकॉज नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल में एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है एंड रेशियो में होता है. आई होप ये समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. Please like, subscribe, share my channel to your friend and ask doubt in comment. Thank you so much.